નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, અગાઉના લેક્ચરની અંદર આપણે પહેલું કાવ્ય આરાધના સાથે સમજૂતી મેળવી, સાથે સાથે એના સ્વાધ્યાયના અને અન્ય પ્રશ્નોની પણ આપણે ચર્ચા કરી. તો હવે પછી આપણે આપણા પાઠ્યપુસ્તકની અંદરનું જે બીજું ચેપ્ટર છે જેનું નામ છે ન્યાયમંત્રી. તો આજ દોસ્તો આપણે આ બીજા પાઠનો આપણે અભ્યાસ કરીશું. તો સૌથી પહેલા મિત્રો આપણું જે બીજું ચેપ્ટર છે જેનું શીર્ષક અથવા તો જેનું નામ આપણે ન્યાયમંત્રી આપવામાં આવ્યું છે. તો સાહિત્ય પ્રકારની દ્રષ્ટિએ આ પાઠ છે એ કહાની છે. કહાની યાની કે ગુજરાતીમાં આપણે જેને વાર્તા કહીએ છીએ. આ વાર્તાના અથવા તો આ કહાનીના સર્જક અથવા તો એના લેખક છે બદ્રીનાથ શર્મા, કે જેનું ઉપનામ સુદર્શનજી, કે જેનું ઉપનામ છે સુદર્શન. તો મિત્રો આજની જે આ કહાની છે એ કહાની સુદર્શનજી દ્વારા ન્યાયમંત્રી શીર્ષક અંતર્ગત हमारे पाठ्यक्रम में दी गई. तो ये कहानी का मूल उद्देश्य कि दोस्तों आजकल नई पीढ़ी में जो हमारी न्याय व्यवस्था है उसी न्याय व्यवस्था में कुछ न कुछ प्रकार की कमियां ये महसूस होती है. तो इसी न्याय व्यवस्था को लेकर कि न्याय व्यवस्था सही अर्थ में कैसी होनी चाहिए, न्याय किस प्रकार दिया जाता है, निष्पक्ष न्याय कौन सा होता है, उसी आधार को लेकर हमारे इतिहास पर आधारित आप लोगों ने सम्राट अशोक का नाम सुना होगा कि जिसके ऐतिहासिक पात्र को लेकर इस कहानी का यहाँ पर लेखक ने सुंदर तरीके से सर्जन किया कि जिसमें न्याय की व्यवस्था सुदर्शन जी ने यहाँ पर अशोक के माध्यम से सम्राट अशोक के राज्य में, कि जिस समय सम्राट अशोक एक सच्चे न्याय मंत्री के खोज में थे, कि न्याय मंत्री की खोज में थे, उसी समय उन्होंने एक दिन न्याय की खोज के लिए, यानी कि सच्चा न्याय कौन कर सकता है, ऐसे उनकी खोज के लिए एक दिन अपने नगर के एक शिशुपाल नाम का एक ब्राह्मण था, उनके घर पर या तो उनके द्वार पर जाता है. तो दोस्तों एक कहानी का जो ये विषय वस्तु है, सबसे पहले हम उसे संक्षिप्त में या तो उनका सार हम यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं. तो एक दिन वह नवयुवक यानी कि जो सम्राट अशोक था, नवयुवक के रूप में एक ब्राह्मण जो शिशुपाल था उनके घर पर जाता है. जब शाम का समय था, शाम के समय में शिशुपाल अपने घर में था, उसी समय दरवाजे से किसी व्यक्ति आकर शिशुपाल के घर का दरवाजा खटखटाता. तो शिशुपाल दरवाजा खोलकर कहता है कौन है. तो सामने से आवाज आती है कि मैं एक परदेशी युवक हूं और आज की रात मुझे यहाँ काटनी है. तो शिशुपाल उनको अपने घर पर आए हुए अतिथि के रूप में उनका आदर करते, उनका सत्कार करता और कहता है कि मेरे घर अतिथि यानी कि मेरे घर मेहमान आए तो ये मेरा सौभाग्य है, ये मेरी खुश नसीबी है. इसी प्रकार उनका आदर करता है, सत्कार करता है. दोनों अपने घर में बैठते, दोनों के बीच राज्य की जो व्यवस्था है, राज्य की जो न्याय व्यवस्था, उसके बारे में चर्चा होती है. तो शिशुपाल कहता है कि आजकल हमारे राज्य की जो न्याय व्यवस्था है वो अच्छी नहीं है, हमारी न्याय व्यवस्था में बहुत सारी कमियां महसूस होती है. तो ये बात जो नवयुवक था वो उसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था. उसने कहा कि
ये बात बताना सरल बात है। किसी को दोषी ठहराना है, तो किसी को दोष देना ये सरल बात है, पर उसे करके दिखाना बहुत कठिन बात है। तो शिशुपाल कहता है अगर मुझे जो अवसर मिले, मौका मिले, तो मैं ये करके दिखाऊंगा। तो इसी प्रकार दोनों के बीच कई बातचीत हुई, रात हो गई, दोनों सो गए। सुबह में शिशुपाल ने जो नवयुवक था उसे विदा किया। और इसी प्रकार दूसरे दिन जब शिशुपाल के घर दरबार से कुछ सिपाही शिशुपाल को दरबार में बुलाने के लिए आता है, तो ये देखकर कि शिशुपाल ने सिपाही आकर कहता है शिशुपाल जी आपको महाराज दरबार में हाजिर होने के लिए दरबार में बुलाता है। तो शिशुपाल सिपाही के साथ दरबार में जाता है। वहां जाकर देखते हैं तो जो सिंहासन था उस सिंहासन पर जो उनकी राज में अगली रात जो उनके घर पर जो व्यक्ति ठहरा था वही नवयुवक सिंहासन पर बैठा था। यह देखकर शिशुपाल घबरा गया। ये तो वही नवयुवक है कि जिन्हें मैंने ये राज्य की जो न्याय व्यवस्था के बारे में मैंने प्रश्न उठाया। तो इसी प्रकार जब वह दरबार में आता है तब राजा जो सम्राट अशोक है उसे न्याय मंत्री बनने का अवसर देता है, यानी कि राज्य का न्याय मंत्री बनने की जिम्मेदारी उन्हें सौंपता है। और राजमुद्रा यानी कि एक राज्य की न्याय मंत्री होने की निशानी अंगूठी उसे देता है। और वही अंगूठी पहनकर आज से वह इस राज्य का न्याय मंत्री बन जाता है। तो शिशुपाल को इसी प्रकार राज्य का न्याय मंत्री बनाया जाता है। उसी दिन से शिशुपाल राज्य की जो सुप्रबंध, जो सुव्यवस्था, जो न्याय तंत्र कैसा होता है उसके बारे में दिल लगाकर वह कार्यरत हो जाते हैं, काम करने लगता है। सारी ओर नगर में सारी ओर एक ही चर्चा होती कि अब हमारी न्याय व्यवस्था बहुत मजबूत हो गई है। लोग एक दूसरे के साथ एक न्याय मंत्री की प्रशंसा करने लगे। अब हमारे राज्य में शांति स्थापित हो गई, एक दूसरे को किसी भी प्रकार का भय अब नहीं रहा है। यहाँ तक कि लोग अपने घर में खुले छोड़कर दरवाजे खिड़की बंद भी नहीं करते, इसी प्रकार अपने घर को छोड़कर चले जाते, फिर भी किसी भी प्रकार की कोई मुसीबत ये राज्य में नहीं। इसी प्रकार की एक सुंदर न्याय व्यवस्था उन्होंने बनाई। पर दिन बढ़ते समय यानी कि एक दिन ऐसी घटना घटित होती है कि राज्य का एक पहरेदार, एक सिपाही की हत्या हो जाती है। तो अब शिशुपाल के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी आई, क्योंकि इस शिशुपाल के एक न्याय मंत्री होने के नाते उसका गुनहगार यानी कि उसका जो दोषी था उसे उसका पता। तो जो राज्य के पहरेदार की हत्या हो गई, किसने हत्या की, इसका दोषी कौन है, अपराध किसने किया है, इन अपराधी को ढूंढने के लिए शिशुपाल ने रात दिन एक कर दी। और एक समय ऐसा आया कि उन्हें पहरेदार का जो हत्यारा था वह उन्हें मिल जाता है। दरबार में आता है, राजा उन्हें पूछता है शिशुपाल आपको सिपाही का हत्यारा मिल गया? तो शिशुपाल गर्व से कहता है जी महाराज, मुझे सिपाही का अपराधी यानी कि जो हत्यारा था वो मुझे मिल गया। तो तुम बताओ वो अपराधी कौन है? तो शिशुपाल साहस से, हिम्मत से कह देता है कि महाराज सिपाही की हत्या आपने की, मेरी दृष्टि से आप दोषी थे। तो इसी प्रकार राजा को शिशुपाल दोषी ठहराता है और उनके लिए, क्योंकि शिशुपाल कहता है मैं न्याय मंत्री हूं,
मेरे लिए राजा हो या रंग, अमीर हो या गरीब, मेरे लिए न्याय सबसे पहले। इसलिए आप दोषी थे, आप अपराधी हैं, इसलिए आपको मैं फांसी की सजा देता हूं। इसी प्रकार वह अपना फैसला सुनाता है। सारी सभा में स्तब्धता छा जाती है। ये तो शिशुपाल ने महाराज को ऐसा अपराध का ऐसा दंड दे दिया, फांसी की सजा दे दी। फिर वह अपने सिपाही को संकेत करता है और एक राजा की सोने की मूर्ति यहाँ पर लाई जाती है और कहा जाता है कि महाराज, मैं न्याय मंत्री हूँ, मेरा न्याय कभी झूठ नहीं हो सकता। आप महाराज हैं, इसलिए शास्त्रों के नियम के अनुसार राजा को सजा नहीं दी जाती है। यानी कि धर्म के नियम के आधार पर, शास्त्र के नियम के आधार पर राजा को सजा ईश्वर देगा, यानी कि राजा को ईश्वर ही सजा देगा। इसलिए मैं राजा को सजा नहीं दे सकता, पर मैं अपना न्याय सच साबित करने के लिए ये जो सोने की मूर्ति है उसे फांसी की सजा दिलवा दूंगा, ताकि लोगों को ये शिक्षा मिले, लोगों को ये संदेश मिले कि कोई भी व्यक्ति हो, अमीर हो या गरीब, या तो राजा हो या राम, सभी के लिए न्याय सच्चा होना चाहिए। तो इसी प्रकार का न्याय देकर राजा जो अशोक था, उन्हें अपने जो न्याय मंत्री की खोज थी, वह सच्चा न्याय मंत्री उन्हें मिल गया और अंत में सोने की जो राजा की मूर्ति थी उन्हें फांसी के तख्ते पर लटका दिया। और इसी प्रकार राजा बहुत खुश हुए और फिर शिशुपाल ने अपने हाथ की जो शासन की जो निशानी थी, अंगूठी थी, उतार कर राजा को सौंप दिया और कहा कि महाराज, अब ये बोझ मुझसे नहीं उठा जाएगा। यानी कि अब ये न्याय मंत्री की जो जिम्मेदारी है, जो ये दायित्व है, वो मैं नहीं संभाल पाऊंगा। तब राजा उसे आश्वस्त करते हुए कहते हैं कि शिशुपाल, ये कार्य अब तुम्हारे सिवा और कोई नहीं कर सकता, यानी कि तुम्हारे अतिरिक्त एक जिम्मेदारी और कोई नहीं संभाल सकेगा, इसलिए तुम ही इस राज्य के न्याय मंत्री हो और न्याय मंत्री रहो। इसी प्रकार ये कहानी का अंत होता है। तो मित्रों, आ रीते आ एक कहानी में एक सार, एक संक्षिप्त रूप ની અંદર આપણે એનો સાર રૂપે લીધી કે ખરા અર્થમાં ન્યાયનું મહત્વ, કે કોઈ પણ વ્યક્તિ હોય, ગરીબ હોય કે પછી ધનવાન હોય, કે રાજા હોય કે પછી કોઈ ગરીબ કે કોઈ રંગ હોય, પણ એ દરેકને માટે ન્યાય છે એ ખરેખર ન્યાય જ હોય છે। અને એ રીતે અહીંયા શિશુપાલ ખરા અર્થની અંદર એક ન્યાયપ્રિય વ્યક્તિ તરીકે રાજા અશોકના દરબારની અંદર એક न्याय सत्यना मार्ग सच्चा न्याय साचो न्याय करनार व्यक्ति तरीके एक मंत्री મળે છે। રાજાની જે એક સારા ન્યાય મંત્રીની જે ખોજ હતી, જે શોધ હતી, એ અહીંયા પૂર્ણ થાય છે। તો મિત્રો, હવે આપણે આ જે કહાની છે, આ વાર્તા છે, અને આપણે અહીંયા એ વાર્તાની અંદર આવતા કેટલાક જે જટિલ શબ્દો છે કે જેના શબ્દાર્થ મેં અહીંયા બોર્ડ ઉપર લખેલા છે, તમારી જે તમે સ્ક્રીન ઉપર અહીંયા જોઈ શકશો। ત્યાર પછીના જે આ પાઠની અંદર કહાની અંદર આવતા જે વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ છે કે જે આપણા પાઠ્યપુસ્તકની અંદર એ પરીક્ષા માટે ઘણા બધા એ વ્યાકરણના પ્રશ્નોની અંદર ખૂબ ઉપયોગી બને। એ જ રીતે અહીંયા આપણને સમાનાર્થી શબ્દો છે એ પણ અહીંયા મૂકવામાં આવે છે। જે કાંઈ અહીંયા શબ્દો મૂકવામાં આવે છે તમારી સામે, જે સ્ક્રીનની સામે છે, તે પાઠ્યપુસ્તક ઉપર આધારિત છે, એની અંદર છે જરૂરી શબ્દો બધા જ અહીંયા લખેલા છે। ત્યાર પછી शब्द समूह के लिए एक शब्द जो हमारे किताब में यानी कि कहानी में आने वाले शब्द समूह के लिए एक शब्द वो भी यहाँ पर तो આપણે હવે પછી જે આ કહાનીના જે સર્જક છે બદ્રીનાથ શર્મા, એનો આપણે પહેલા ટૂંકો પરિચય લઈએ અને ત્યાર પછી આપણે આ કહાનીને આપણે અહીંયા સાર સ્વરૂપે સમજ્યા, પણ હવે અહીંયા વિગતવાર રીતે આપણે આ કહાનીને સંપૂર્ણ રીતે વિસ્તારપૂર્વક આપણે સમજવાનો પ્રયાસ કરીએ। તો મિત્રો, તમારી પાસે પાઠ્યપુસ્તક
હશે આ કહાનીને સમજતા તમે પાઠ્યપુસ્તકમાં સાથે રાખજો, જેથી કરીને આ કહાની સમજવામાં આપણે એ સારી રીતે એક વિસ્તારપૂર્વકની કથા વસ્તુ આપણે સમજી લઈએ. તો સૌથી પહેલા આપણે અહીંયા આ કહાનીના જે લેખક છે બદ્રીનાથ શર્મા, જેનું ઉપનામ શું છે? સુદર્શન. એનો આપણે પહેલા પરિચય લઈએ, ત્યાર પછી આપણે આ વાર્તાને વિસ્તારપૂર્વક समझिए જોઈએ કે सुदर्शन जी का मूल वास्तविक नाम बद्रीनाथ शर्मा था। आपका जन्म 1896 ईस्वी सन पंजाब राज्य के सियालकोट नामक स्थान में हुआ था। बचपन से ही आपने कहानियां लिखना प्रारंभ किया था, એટલે કે બાળપણથી જ બદ્રીનાથ શર્માજીએ વાર્તાઓ કહાનીઓ એ લખવાની શરૂઆત કરી હતી। પુષ્પલતા, સુપ્રભાત, પરિવર્તન, अनघड़, नगीना आदि आपके सुप्रसिद्ध कहानी संग्रह એટલે કે આ બધી એમની વાર્તા અથવા તો કહાનીના જે પ્રસિદ્ધ એ કહાનીનો સંગ્રહ છે, તો તેનો પુસ્તક છે। आपका एकमात्र उपन्यास है जिसका नाम है भागवती। उपन्यास यानी कि गुजराती में જેમ આપણે નવલકથા આવે ને એમાં ઉપન્યાસ છે, જે એક લાંબી વાર્તા એટલે કે એ લાંબી સ્ટોરી વાળી જે કહાની સ્ટોરી વાર્તા જે હિન્દીની અંદર ઉપન્યાસ તરીકે ઓળખાય છે, ગુજરાતીમાં જે નવલકથા છે હિન્દીમાં ઉપન્યાસ, એટલે એમનું એકમાત્ર ઉપન્યાસ છે જેનું નામ છે ભાગવતી। તો દોસ્તો હવે આપણે અહીંયા આ કહાનીને એક વિસ્તારપૂર્વક સમજવાનો અહીંયા પ્રયાસ કરીએ। જોઈએ કહાનીનો આરંભ શરૂઆત કઈ રીતે થાય છે। तो संध्या का समय था, चारों ओर अंधकार फैल चुका था। ऐसे में किसी ने बाहर से घर का दरवाजा खटखटाया, यानी कि सांझनो समय હતો, સંધ્યાનો સમય હતો, ચારે બાજુ અંધારું ઘનઘોર અંધકાર છે ફેલાયેલું હતું અને એવા સમયે કોઈએ બહારથી આવીને દરવાજો ખટખટાયો। तो कौन है? ब्राह्मण शिशुपाल ने थोड़ा सा दरवाजा खोलते हुए पूछा। थोड़ो दरवाजो खोली અને બ્રાહ્મણ શિશુપાલે પૂછ્યું કે ભાઈ કોણ છે, એમ પોતે દરવાજો ખોલીને પૂછે છે। ત્યારે સામે તેનો જવાબ મળે છે, એક પરદેશી બહાર से आवाज आई। શું બહારથી આવાજ આવે છે? હું એક परदेशी मानस, क्या मुझे रात काटने के लिए स्थान मिल जाएगा? શું કહે છે કે ભાઈ મને અહીંયા एक रात काटने के लिए स्थान मिल जाएगा, यानी कि હું અહીંયા આ સ્થાન ઉપર રાત્રિ રોકાણ કરવા માંગુ છું, મને અહીંયા રાત્રિ રોકાવા માટેનો એક સ્થાન મળશે, જગ્યા મળશે, આવું શિશુપાલને આ આવનાર જે અજાણ્યો યુવક છે એ અને એવું પૂછે છે। ત્યારે जैसे ही शिशुपाल ने पूरा दरवाजा खोला, उनके सामने एक नवयुवक खड़ा था। જેવી રીતે આખો દરવાજો ખોલ્યો તો એની સામે એક નવજવાન, એક નવયુવક એ એની સામે ઊભો હતો। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा અને હાસ્ય સાથે ચહેરા પર પ્રસન્નતા હતી, મુસ્कुराना यानी कि प्रसन्नता કે प्रसन्नता સાથે એને પૂછ્યું, यह मेरा सौभाग्य है, अतिथि के शरणों से यह घर पवित्र हो जाएगा, आइए पधारिए। શું કહે છે કે ભાઈ આ તો મારું સૌભાગ્ય છે કે કોઈ મહેમાન કે અતિથિના આગમનથી મારું ઘર, મારું આંગણું એ પવિત્ર થઈ જશે, આવો પધારો, વેલકમ, એમ કરીને આ નવયુવકને પોતાના ઘરની અંદર આ શિશુપાલ નામનો બ્રાહ્મણ છે એને સ્થાન આપે છે। अतिथि को लेकर शिशुपाल घर में गए और उनका आदर सत्कार किया। फिर जो मेहमान था नवयुवक था उन्हें अपने घर में लेकर गया और उनका आदर किया, उनका सम्मान किया। फिर दोनों उस समय की देश की अवस्था पर बातें करने लगा। फिर બંને મિત્રો यानी कि ये नवयुवक અને શિશુપાલ બંને દેશની જે વર્તમાન જે હાલની અવસ્થા ને દિશા સ્થિતિ અથવા તો હાલત જેને શબ્દ અહીંયા લખેલો કે ભાઈ વર્તમાન સ્થિતિ કેવી છે એના વિશે બંને વચ્ચે વાતચીત અથવા તો સંવાદ થવા લાગ્યો। शिशुपाल ने कहा, आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है, परंतु परदेशी इस बात से सहमत नहीं था। શું
શું કહે છે? શિશુપાલે એવું કીધું કે આજકાલ વર્તમાન સ્થિતિમાં આપણા નગરની અંદર આ દેશની અંદર આજકાલ જ્યાં જોઈએ ત્યાં અન્યાય થઈ રહ્યો છે, પણ આ નવયુવક શિશુપાલની આ અન્યાયવાળી વાતને માનવા તૈયાર નહોતો અથવા તો એની સાથે સહમત નહોતો। वह बोला दोष निकालना तो सुगम है। दोष यानी कि गलती, भूल। सुगम એટલે સરળ, કે ભાઈ કોકનો દોષ કાઢવો તો સરળ બાબત છે, પરંતુ कुछ करके दिखाना कठिन है। પણ કંઈક કરીને દેખાડવું એ બહુ અઘરું કામ છે, તો એ કઠિન કામ છે, એ કામ ખૂબ મુશ્કેલ છે। शिशुपाल बोले अवसर मिले तो दिखा दूं कि न्याय किसे कहते हैं। और शिशुपाल वह युवक को कहते हैं कि अगर मुझे जो अवसर मिले या तो मुझे जो मौका मिले, अवसर यानी कि मौका, तक, अगर मुझे अवसर मिले तो मैं ये दिखा कर रहूंगा। क्या कहते हैं? मुझे मौका मिले तो मैं ये दिखा कर रहूंगा कि न्याय किसे कहते हैं। तो आप अवसर चाहते हैं, क्या कहता है नवयुवक कि आप तो मौका चाहते हैं? तो शिशुपाल कहता हाँ अवसर चाहता हूं। कैसे? क्या हूं? अवसर इच्छू सोचो तो मौको चाहूं। फिर कोई अन्याय नहीं होगा। प्रश्न करता है नवयुवक कि फिर कोई अन्याय नहीं होगा? तो शिशुपाल कहता है बिल्कुल नहीं। कोई अपराधी दंड से न बचेगा। क्या कहता है? कोई भी अपराधी दंड से नहीं बचेगा। तो कहता है नहीं। परदेशी ने मुस्कुराकर कहा यह बहुत कठिन काम है। परदेशी ने हंसते हुए प्रसन्नता से कहा कि वह ये कार्य बहुत कठिन है, यानी कि बहुत मुश्किल है, अघरू काम है। तो ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं, मैं न्याय का डंका बजाकर दिखा दूंगा। शिशुपाल हिम्मत से कहता है कि ब्राह्मण के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है, मैं न्याय का डंका बजाकर मैं आपको दिखा दूंगा। परदेशी धीरे से मुस्कुराए पर कुछ न बोले। परदेशी धीरे से मुस्कुराए, हंसे, पर वह कुछ बोले नहीं। फिर कुछ देर बाद वे सो गए। फिर कुछ देर बाद आ रीते બંને વચ્ચે એકબીજા સાથેનો સંવાદ થયો, વાતચીત થઈ, પછી થોડી વાર પછી સૂઈ ગયો, એટલે કે બંને આરામ કર્યો। પછી આગળ सुबह उठकर परदेशी ने शिशुपाल को धन्यवाद देकर उनसे विदा ली। सुबह એટલે કે વહેલી સવારે ઉઠી અને શિશુપાલ ને પેલો નવયુવક છે એનો ધન્યવાદ એનો આભાર માનીને ત્યાંથી એ વિદાય લે છે, એટલે કે પોતાને ઘેર જાય છે। कुछ दिनों बाद शिशुपाल के घर कुछ सिपाही आए और उन्हें दरबार में चलने के लिए कहा। थोड़ा दिवस क्या પછી શિશુપાલના દરબારની શિશુપાલના ઘરની અંદર દરબારમાં કેટલાક રાજ્યના સિપાહીઓ આવ્યા અને આવીને એમને કહ્યું कि राजा को आपको राज्य में यानी कि दरबार में चलने के लिए कहा। शिशुपाल सहम गए। सहम जाना दोस्तों ये मुहावरा है, यानी कि भयभीत हो जाना। शिशुपाल भयभीत बनी गयो, कारण के राज्यના સિપાહીઓને એ બોલાવવા માટે આવે છે, રાજ્યમાં લઈ જવા માટે આવે છે, એટલે આ પ્રકારે શિશુપાલ છે એ ભયભીત થઈ જાય છે કે ભાઈ આ શું મેં એવો શું ગુનો કર્યો, શું અપરાધ કર્યો, મને રાજ્યમાં શા માટે બોલાવતા છે, એમ કરીને પોતે ગભરાઈ જાય છે, એ ભયભીત થઈ જાય છે। वे समझ नहीं सके कि सम्राट ने इन्हें क्यों बुलाया है। ये એવું સમજી ન શક્યો સમ્રાટ यानी कि राजा કે રાજાએ એને શા માટે બોલાવ્યો હશે, એ કાંઈ સમજી શક્યો નહીં। कहीं उस परदेशी ने तो सम्राट से झूठी सच्ची शिकायत नहीं कर दी। कदाच આ પેલો જે પરદેશી માલિકી આવ્યો હતો એને કદાચ સાચી ખોટી કઈક ફરિયાદ શિકાયત એટલે કે ફરિયાદ કદાચ તે ફરિયાદ રાજાને નહીં કરી હોય ને કે જેથી કરીને મને એ બોલાવવા માટે। तो दरबार में पहुंचकर शिशुपाल का कलेजा धड़कने लगा जब उन्होंने देखा कि परदेशी ही सम्राट। जब शिशुपाल दरबार में पहुंचा तो उनका हृदय की धड़कन तेज हो गई। कलेजा धड़कना ना हृदयना धबकारा वधी गया, એને ડર લાગવા મળ્યો કે ભાઈ જે રાજ્યના સિંહાસન ઉપર
બેઠેલા જે પેલો ગત રાતે તેમને ત્યાં આવેલો એ જ નવયુવાન છે, જે મહારાજ છે, તો એ સમ્રાટ પોતે જ છે. આ દ્રશ્ય જોઈને એમના હૃદયના ધબકારા વધી ગયા. सम्राट बोले, ब्राह्मण देवता, मैं आपको न्याय का अवसर देना चाहता हूँ, आप तैयार है? क्या कहते हैं? ब्राह्मण देवता, मैं आपको न्याय का अवसर देना चाहता हूँ, आप उस अवसर को लेने के लिए तैयार है? यानी कि मैं आपको मौका देना चाहता हूँ, आप मौका उठाने के लिए तैयार है? तो पहले तो शिशुपाल घबराए, फिर बोले यदि सम्राट की यही इच्छा है तो मैं तैयार हूं. तो पहला तो शिशुपाल से घबराई जाए છે. પછી કે છે કે જો મહારાજની ઈચ્છા હોય તો હું એ અવસર એ મોકો એ લેવા માટે હું તૈયાર છું. बहुत ठीक, कल से आप न्याय मंत्री होंगे. तो महाराज कहते हैं ठीक, बहुत सारू, तो आवती काल थी तो आ राज्य नो न्याय मंत्री. सम्राट ने कहा और अपने हाथ से अंगूठी उतारकर शिशुपाल को पहना. और सम्राट ने अपने हाथ से जो अंगूठी थी, जो शासन की निशानी, कि जो अंगूठी पहनकर जो राज्य का एक मंत्री होने की एक सबूत है, ये अंगूठी उन्हें पहना दी, उसे उन्हें दी और उनके हाथ में, उनकी उंगली में पहना दी. फिर और सम्राट ने कहा कि अंगूठी उतारकर उनको पहना दी. सम्राट अशोक की राज मुद्रा थी. सम्राट अशोक की राज मुद्रा थी, यानी कि जो उन्हें लिखा है शासन की निशानी, शब्द समूह के लिए, यानी कि राज्य की शासन में जो भागीदार व्यक्ति होता था वहां पर उन्हें शासन की निशानी के लिए जो अंगूठी, यानी कि जो राज मुद्रा होती है वह उन्हें पहना दी. किनको? शिशुपाल को. तो इसी प्रकार आगे अब शिशुपाल न्याय मंत्री थे. હવે शिशुपाल से न्याय मंत्री से शो से न्याय मंत्री, उन्होंने राज्य की समुचित व्यवस्था करना आरंभ कर दिया. यानी कि હવે પછી शिशुपाले राज्यની વ્યવસ્થાને समुचित, यानी कि अच्छी तरह शासन चलाना, यानी कि अच्छी तरह न्याय करना, जो सारी रीते राज्यની વ્યવસ્થાને એ સુવ્યવસ્થિત, समुचित, सुव्यवस्थित करवाने शुरुआत करी, आरंभ किया. उसके उनके सुप्रबंध से राज्य में पूरी तरह शांति रहती थी. અને આ સુપ્રબંધ थी, सुव्यवस्था थी, आखा राज्यની અંદર सारी रीते सुव्यवस्था से जलवा लगी. और किसी को किसी प्रकार का भय नहीं था. लोग दरवाजे तक खुले छोड़ जाते थे. कोई ने पण હવે પછી રાજ્યની અંદર કોઈને પણ કોઈ પણ પ્રકારનો ભય નહોતો, ડર નહોતો. અને ત્યાં સુધી કે લોકો પોતાના ઘરના જે દરવાજા છે એ દરવાજાને પણ હવે ખુલ્લા મૂકીને જવા લાગ્યા. એટલે चारों तरफ न्याय मंत्री के सुप्रबंध और न्याय की धूम मचती. चारे बाजू आखा नगरनी अंदर आ नवा न्याय मंत्रीनी जे सुव्यवस्था છે, सुप्रबंध અને એમનો જે ન્યાય છે એ ન્યાયની धूम मच गई. धूम मच जाना यानी कि प्रसिद्धि हो गई, यानी कि राजा के जो शिशुपाल के न्याय की जो प्रसिद्धि सारे नगर में बन गई. यानी कि शिशुपाल न्याय के लिए प्रसिद्ध हो गया. आगे लगभग 1 महीने बाद किसी ने रात में एक पहरेदार की हत्या कर दी. હવે ત્યારથી 1 મહિનાનો સમય વ્યતીત થયો ત્યારે રાત્રિના સમયે કોઈએ રાજ્યના એક સિપાહી પહેરેદાર એની કોઈએ હત્યા કરી. તો સુબહ હોતે ही ये बात चारों तरफ सवार થતા જ આ વાત આખા નગરની અંદર ચારે બાજુએ फैलाई गई. लोग बड़े हैरान थे. लोगों आ दृश्य જોઈને लोग बड़े हैरान थे. शिशुपाल की तो नींद ही उड़ गई. शिशुपाल ने नींद हराम થઈ ગઈ. એને ઊંઘના અવકાશ શું થયું કે પોતે ન્યાય મંત્રી છે અને પોતાના
એ ન્યાય મંત્રી હોવાને નાતે આ હત્યા કોણે કરી છે, આનો અપરાધી કોણ હશે? આ સમસ્યાને લઈને શિશુપાલની ઊંઘ છે એ હરામ થઈ ગઈ અને उन्होंने खाना पीना छोड़कर अपराधी को पता लगाने में रात दिन एक कर दिया और उन्होंने तब से खाना पीना छोड़कर अपराधी को खोजने के लिए यानी कि अपराधी का पता लगाने के लिए रात दिन एक कर दी। तो ये मुहावरा है दोस्तों, रात दिन एक कर देना यानी कि कड़ी मेहनत करना। वह बहुत मेहनत करने लगा, खूब मेहनत करी कि अपराधी को किसी भी प्रकार इसका पता लगाया जा सके। बहुत प्रयत्न करने के बाद जब अपराधी का पता चला तो शिशुपाल के आश्चर्य का ठिकाना नहीं। बहुत मेहनत के बाद शिशुपाल को अपराधी का पता मिल गया तो वह बहुत खुश हो गया। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा कि वह बहुत प्रसन्न हो गया, आश्चर्यचकित हो गए, आश्चर्य का ठिकाना न रहना। वो भी एक मुहावरा जो आपके किताब में भी दिया गया है, उसे भी आपको ध्यान से देखना होगा। फिर स्वयं सम्राट ने उस पहरेदार की हत्या की थी, उन्हें अपराधी मिल गया। स्वयं सम्राट ने यानी कि स्वयं राजा ने उस सिपाही की हत्या की थी। तो सम्राट को अपराधी घोषित करना बहुत ही कठिन काम था दोस्तों। स्वयं राजा अपराधी हो तो એને ગુનેગાર સાબિત કેમ કરવા? આ કામ કોઈ સામાન્ય કહી શકાય નહીં। આ કામ શિશુપાલ માટે ખૂબ મુશ્કેલ કામ હતું, કઠિન કામ હતું। એટલે શિશુપાલ કરે भी तो क्या करे? શિશુપાલ શું કરે? ગુનેગાર स्वयं राजा છે, ન્યાય મંત્રી પોતે છે, જવાબદારી પોતાની બને છે। એટલે હવે શું કરવું ને શું ન કરવું એવી વિમર્શનમાં મૂંઝવણમાં પોતે મુકાઈ જાય છે। એક ઓર पे न्याय मंत्री थे और दूसरी ओर सम्राट के सेवक। બીજી બાજુ એ રાજાનો સેવક પણ હતો, એક બાજુ ન્યાય મંત્રી હતો, કામની જવાબદારી પોતાની હતી, પણ એ કોનો સેવક છે? રાજાનો સેવક છે। એટલે કે શું કરવું એના વિશે એ મૂંઝવણમાં મુકાય છે, શું કરવું અને શું ન કરવું। परंतु न्याय की दृष्टि में सम्राट और साधारण व्यक्ति में कोई अंतर नहीं होता। वह मानता था अगर न्याय की दृष्टि से देखा जाए तो सम्राट और सामान्य व्यक्ति में कोई अंतर नहीं है। वह शिशुपाल ऐसा मानता कि न्याय માટે કોઈ પણ હોય છે, કે રાજા હોય કે પછી રંગ હોય કે સામાન્ય માણસ હોય, ન્યાય દરેકને સરખો જ લાગુ પડે આવું સ્પષ્ટ રીતે પોતે માનતો હતો। એટલે अगले दिन शिशुपाल दरबार में पहुंचे। सम्राट अशोक सिंहासन पर बैठे हुए थे। अगला दिन से सम्राट अशोक से दरबार के अंदर शिशुपाल पहुंचे से सम्राट अशोक से एक सिंहासन पर बैठे रहा था। आते ही उन्होंने शिशुपाल से पूछा, अपराधी का पता चला? आगे पूछू तरह कौन है? राजा है कि भाई गुनेगार अपराधी निभाल हो रही, अपराधी का पता चला? तो न्याय मंत्री ने साहस पूर्वक कहा, जी हाँ चल गए। न्याय मंत्री हिम्मत थी कीधु, साहस थी कीधु के हाँ મને अपराधीનો ખ્યાલ આવી ગયો, મને अपराधी મળી ગયો એવું એ પોતે સાહસથી અને હિંમતથી રાજાને બતાવે છે। તો फिर उसे उपस्थित करो। શું કહે છે? તો પછી એને દરબાર ની અંદર હાજર કરો, ઉપસ્થિત करना यानी कि એને દરબાર ની અંદર હાજર કરો। तो न्याय मंत्री कुछ रुके, फिर अपने कुछ अधिकारी को संकेत करते हुए बोले। थोड़ी बार न्याय मंत्री अटके છે, પછી પોતાના જે સિપાહીઓ છે, જે ધનવીર છે એને ઈશારો કરે છે, સંકેત કરીને કહે છે ધનવીર એને गिरफ्तार करनो मैं आज्ञा देता हूं। શું કહે છે? રાજાની સામે સંકેત કરે છે, ઈશારો કરે છે કે અને તમે गिरफ्तार કરો અને પકડી લો, આ મારો આદેશ છે। આવું પોતાના સિપાહીઓને, પોતાના માણસોને, લોકોને આદેશ કરે છે। તો दरबार में संकेत सम्राट की ओर था। પોતાનો ઈશારો કોની તરફ હતો? સ્વયં રાજા અશોકની સામે હતો।
દરબારની નિસ્તબ્ધતા સામે આ પ્રકારની ધરપકડ गिरफ्तारी વાત એટલે આખા દરબારની અંદર બિલકુલ સન્નાટો છવાઈ ગયો, નિસ્તબ્ધતા એટલે કે શાંતિ, સન્નાટો છવાઈ ગયો, કોઈ કઈ બોલે નહીં। सम्राट का चेहरा क्रोध से लाल हो गया અને સાંભળીને સમ્રાટ રાજાનો ચહેરો એ ક્રોધથી ગુસ્સામાં રાજા लाल चोल થઈ ગયા અને वे सिंहासन से खड़े हो गए और बोले इतना साहस પોતાના સિંહાસન પરથી રાજા ઊભા થઈ ગયા અને કહે છે આટલી હિંમત આવું એ પોતે પેલા એમના માણસોને જ્યારે પકડવા માટે આવે છે ત્યારે એ ક્રોધિત થઈને કહે છે इतना साहस એટલે કે આટલી હિંમત तो न्याय मंत्री ने ऐसा भाव प्रकट किया जैसे कुछ सुना ही का सामने में न्याय मंत्री एवो भाव व्यक्त किया दोस्तों कि कहीं ने हांडलू नहीं, कुछ सुना ही नहीं हो, इसी प्रकार का अपने सहने का भाव ने दिखाया। फिर उन्होंने अपने शब्दों को फिर दोहराया, परिभाषा પોતાના એ જ શબ્દોને પરિભાષાએ બીજી વખત એ બોલ્યો ધનવીર देखते क्या हो, परिभाषा आदेश આપણે જોવો છો શું अपराधी को गिरफ्तार करो, શું કહે છે अपराधी ने पकड़ी लो। दूसरी ही क्षण सम्राट के हाथों में हथकड़ी पड़ गई, એ જ ક્ષણે सम्राट अशोकના હાથમાં હથકડી પડી ગઈ, सम्राटને गिरफ्तार કરી લેવામાં આવ્યો। એ રીતે न्याय मंत्री ने कहा अशोक तुम पर पहरेदार की हत्या का आरोप लगाया जाता है, तुम उसका क्या उत्तर देते हो। सम्राट होठ काट कर रह गए। શું કહેશે શિશુપાલ કે ભાઈ મહારાજ તમારા ઉપર એક દોષિતની હત્યાનો આરોપ લગાવવામાં આવે છે, એ વાત ઉપર તમે શું કહેવા માંગો છો। ત્યારે સમ્રાટ હોઠ કાટ કર રહે ગए, પોતાના હોઠ દબાવીને ક્રોધમાં હોઠ કાટ कर रह जाना मुहावरा यानी कि शोभ प्रकट कर रही है, वह केवल शोभ प्रकट करने रहा, होठ काटकर वह कुछ बोल सका नहीं। न्यायमंत्री ने फिर पूछा तो तुम अपराध स्वीकार करते हो। परिभाषा पूछे जाने के तो શું આપ તમે તમારો અપરાધ ગુનો સ્વીકાર કરો છો। हाँ मैंने उसे मारा अवश्य है, पर उदंड था, उदंड यानी कि अविवेकी कि हाँ राजा के मैंने मार्यो છે જરૂર અથવા તો મેં એની હત્યા જરૂર કરી છે, પણ એ વ્યક્તિ અવિવેકી હતો, એ સિપાહી ઉદંડ હતો, ऐसा सम्राट का उत्तर था। वह उदंड था या नहीं, तुमने एक राज कर्मचारी की हत्या की है। शिशुपाल कैसे के એ અવિવેકી હતો કે નહીં એ વાત અલગ છે, પણ તમે એક રાજ્યના કર્મચારીની તમે હત્યા કરી છે, એમની તમે મૃત્યુદંડ આપ્યો છે, તો તેની હત્યા કરી છે અને इस प्रकार तुम अपराधी हो। શું કહે છે કે તમે अपराधी हो, तुम्हें मृत्युदंड दिया जाता है। न्याय मंत्री ने कि तुम अपराधी हो इसलिए तुम्हें मृत्युदंड दिया जाता है, ऐसा राजा ने अपना न्याय दिया, तो अपना आदेश दिया। जो शिशुपाल को एक न्याय मंत्री की हैसियत से उन्हें जो राजा को भी इसी प्रकार सजा देने में किसी भी प्रकार का संकोच नहीं हुआ। तो सभा में सन्नाटा छा गया। आ निर्णय साંભળીને આખા દરબારની અંદર આખી સભાની અંદર एकदम शांति छवाई गई, एकदम सन्नाटो छवाई गयो। न्याय मंत्री का निर्णय सुन सम्राट ने सिर झुका लिया। न्याय मंत्री નો આ નિર્ણય સાંભળીને सम्राट अशोके પોતાનું મસ્તક से नीचे झुकाવી દીધું, सिर झुका लिया। वे तो स्वयं शिशुपाल की परीक्षा में सफल हो गए थे, वे तो પોતે शिशुपाल की परीक्षा में પોતે सफल થઈ ગયો હતો, કારણ કે અમને તો એક સારા ન્યાય મંત્રીની જરૂર હતી। એ પોતે શિશુપાલની આ પરીક્ષાની અંદર પોતે સફળ થયો છે કે ખરેખર ભલે પોતાને આ દંડ આપ્યો પણ એને સાચો એ ન્યાય મંત્રી છે એને મળી ગયો છે। એટલે એ રીતે એ પોતે એમાં પોતાની સફળતા એ માને છે। એટલે सम्राट का हृदय ऐसे व्यक्ति को पाकर गदगद हो रहा था, यानी कि सम्राट अशोकનું હૃદય આવી વ્યક્તિને પોતાના રાજ્યની અંદર આવા વ્યક્તિના મળવાથી એનું હૃદય છે એ ગદગદ હો ગયા।
गदगद हो जाना, यानी कि सम्राट भाव विभोर हो गया, क्योंकि उनको शिशुपाल जैसा एक सच्चा न्याय मंत्री अब मिला था। और अंत में तभी न्याय मंत्री का संकेत पाकर एक कर्मचारी सम्राट अशोक की सोने की मूर्ति लेकर उपस्थित हो गया। न्याय मंत्री ने खड़े होकर कहा, सज्जनों, यह सच है कि मैं न्याय मंत्री हूँ और यह भी सच है कि अपराधी को दंड मिलना चाहिए, परंतु अपराधी और कोई नहीं, स्वयं सम्राट है। પોતાના ઈશારાથી એમના જે કર્મચારીઓ છે સોનાની મૂર્તિ લઈને આવે છે ત્યારે શિશુપાલ કહે છે સભાની અંદર કે હું એક ન્યાય મંત્રી છું એટલા માટે, અને જે અપરાધી છે કોઈ સામાન્ય માણસ નથી પણ સ્વયં રાજા છે, એટલા માટે મારા માટે ન્યાય મહત્વનો છે, સામેની વ્યક્તિ કોઈ પણ હોય, અને એટલા માટે એના એક ઉકેલ કે શાસ્ત્રો में राजा को ईश्वर का रूप माना गया है। शिशुपाल કહે છે કે આપણા શાસ્ત્રોની અંદર રાજાને ભગવાનનું રૂપ માનવામાં આવે છે અથવા તો ઈશ્વરનું રૂપ માનવામાં આવે છે, इसलिए उसे ईश्वरी दंड कह सकता है, એટલા માટે એને ભગવાન અથવા તો ઈશ્વર પોતે જ દંડ આપી શકે। अतएव मैं आज्ञा देता हूँ कि सम्राट को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए। હવે હું એક આજ્ઞા આપું છું કે સમ્રાટ અશોકને ચેતવણી આપીને એ છોડી મૂકવામાં આવે, અને એની જગ્યાએ और उनके स्थान पर इस सोने की मूर्ति को फांसी पर लटका दिया जाए, जिससे लोगों को शिक्षा मिले। એની જગ્યાએ આ સોનાની મૂર્તિ છે એને फांसी पर लटकावવા તો फांसीની સજા આપવામાં આવે, જેથી કરીને લોકોને એક શિક્ષા મળે, શિક્ષા એટલે કે संदेशो મળે, एक उपदेश મળે कि सच्चा न्याय किसे कहा जाता है। तब अंत में न्याय मंत्री का न्याय सुनकर लोग जय जयकार करते। न्याय मंत्री को आ न्याय साંભળીને સભાની અંદર બધા લોકો जय जयकार કરવા લાગ્યા। जब सब लोग चले गए तो शिशुपाल ने राजमुद्रा सम्राट अशोक के सामने रख दी और बोले, બધા અહીંયા કે આપણે પોતાની જે શાસનની જે નિશાની છે રાજમુદ્રા છે એ રાજાને આપવા લાગે। शिशुपाल ने कहे છે, શું કહે છે, महाराज यह राजमुद्रा वापस ले लो, मुझसे यह बोझ नहीं उठाया जाएगा। ये राजमुद्रा वापस ले लो, मुझसे ये बोझ नहीं उठाया जाएगा। अशोक ने सम्मान भरी दृष्टि से उनकी ओर देखते हुए गदगद कंठ से कहा, आपने मेरी आंखें खोल दी, ये आपका साहस असंख्य। क्या कहता है सम्राट अशोक, आपने मेरी आंखें खोल दी। आंखें खोल देना यानी कि मुझे अपनी सच्चाई का आपने ख्याल करवा दिया, सच्चाई का ज्ञान करवा दिया, तो अपने मेरी आंखों को खोल दिया, आपका साहस प्रशंसनीय, यानी कि तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारी शक्ति खरेखर प्रशंसनीय છે, વખાણવા લાયક છે। यह बोझ आपके अतिरिक्त और कोई नहीं उठा सकता। आ बोझ यानी कि आ जवाबदारी, आ जिम्मेदारी या तो आ ये दायित्व आपके सिवा और कोई नहीं उठा सकता। न्याय मंत्री निरुत्तर हो गए। आवाज सांभळीने न्याय मंत्री कई बोली शक्या नहीं, उत्तर आपी शक्या नहीं, निरुत्तर हो गए। तो आ रीते शिशुपालने एक साचा न्याय मंत्री तरीके अथवा तो सम्राट अशोकने एक जे न्याय मंत्रीनी खोज छे एक खरा अर्थनी अंदर मळी गई। तो मित्रों आ रीते आ कहानी सरस मजानी आपने न्याय की जे निष्पक्षता छे, खरा अर्थनी अंदर न्याय केवो होवो जोईए एना माटेनो सरस मजानो संदेशो अथवा तो सरस मजानी सीख आ वार्ता द्वारा आपने मळे छे। तो मित्रों આપણે આ પાઠ અહીંયા આજે પૂર્ણ કરીએ છીએ, પણ સાથે સાથે આ પાઠની જે આપણે પાકી બુકની અંદર પાકા ચોપડાની અંદર લખવા માટેની જે પીડીએફ ફાઇલ છે, અને સાથે સાથે આપણું જે આગળનું પહેલું ચેપ્ટર પહેલું કાવ્ય આપણે ભણ્યા તેની પણ સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોની ફાઇલ છે। આજે હું આ વિડીયોની સાથે એટલે કે આ વિડીયો તમને જ્યારે મળશે ત્યારે એની સાથે બંનેની પીડીએફ ફાઇલ છે મળશે, જે તમે સારા અક્ષરે વ્યવસ્થિત રીતે પાકી બુકની અંદર એ વ્યવસ્થિત રીતે લખી લેજો, જે પછીથી આપણે આગળ એ ચેક કરવામાં આવશે। જે બાકી બુક આપણે અગાઉ જે સમજી ગયા ઇન્ટ્રોડક્શન જે લેક્ચર હતો એની અંદર જે વિષય પ્રવેશની અંદર, એટલે પહેલું કાવ્ય અને બીજો પાઠ આપણે અહીંયા પૂર્ણ કરીએ છીએ। અહીંયા સ્ક્રીન ઉપર જે શબ્દો છે એ પણ તમે વ્યવસ્થિત રીતે જોઈ લેજો, અને
એ બુકની અંદર અથવા તો એ જ્યારે તમે સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોની લખવાની શરૂઆત કરો ત્યારે ખાસ શબ્દાર્થ લખજો. પછી સ્વાધ્યાયની અંદર વિરુદ્ધાર્થી સમાનાર્થી એ શબ્દો તેની અંદર સમાવિષ્ટ થતા હશે. બરાબર. હવે ફરી પાછા ખાસ બાકી બુકની અંદર બંને પીડીએફ તમને મળશે. પહેલા કાવ્ય આરાધનાની અને બીજી આ ન્યાયમંત્રી 5 વિશે તમે બાકી બુકની અંદર વ્યવસ્થિત રીતે તમે એ લખીને તૈયાર રાખજો. સારા અક્ષર. બરાબર. હવે ફરી પાછા આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોની અંદર મળશું ત્યારે આપણે આગળના સેક્ટરની અંદર પ્રયાણ કરીશું.